So hello everyone, in this video we will study social contract theory. One ruler, one concept. Monarchy system. There should be only one ruler and all the people should obey the ruler. Rulers should work for the benefit of people. People should obey the rules imposed by ruler against the ruler if they are deprived of the basic necessities. They will be deprived by the basic necessities. ये social contract नहीं, ये divine theory. John Locke, monarchy. One country, one ruler, constitutional monarchy set the rules, regulations that should run the society. Another English political philosopher belonged to 17th century. He was an ardent advocate of constitutional monarchy in England. He expresses goods, private goods, common goods, public goods, club goods. राइवलरस और एक्सक्लूडेबल. देखो प्राइवेट गुड्स जो होते हैं वो एक्सक्लूडेबल और राइवलरस होते हैं. क्लॉथिंग कारपोरेशन. राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल ये कॉमन गुड्स होते हैं. जो नॉन एक्सक्लूडेबल है लेकिन राइवलरस है. नॉन एक्सक्लूड मतलब किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जाता है. और राइवलरस मतलब उसकी कंज्यूम करने से उसकी वैल्यू कम होती है, मतलब उसकी अमाउंट कम होता है, उसका क्वांटिटी कम होता है. फिश स्टॉक्स, टिम्बर, कोल, नेशनल हेल्थ सर्विस. नॉन राइवलरस और एक्सक्लूडेबल. नॉन राइवलरस मतलब कि उसके से कम होता है कंजम्पशन लेकिन एक्सक्लूडेबल नहीं है. वो एक्सक्लूडेबल है. नॉन राइवलरस मतलब कम नहीं होता लेकिन एक्सक्लूडेबल है. क्लब गुड्स और ये हो गया जैसे सिनेमा, प्राइवेट पार्क, सैटेलाइट, टेलीविज़न एट्सेट्रा. नॉन राइवलरस, नॉन एक्सक्लूडेबल. पब्लिक गुड्स एग्जाम्पल फ्री टू एयर, टेलीविज़न, एयर, नेशनल डिफेंस एट्सेट्रा. एग्रीगेट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, MBI. फिर है अपना सोशल गुड्स. These are defined as public goods that could be delivered as private goods but are usually delivered by the government for various reasons including social policies and funded via public funds like taxes. Defense, public workers, public fireworks, lighthouses, clean air and other environment goods and informational goods. Some goods such as orphans drugs require special government incentives to be produced but cannot be classified as public goods since they don't fulfill the above requirement. Non-excludable, non-rivalrous social goods. क्या लिखा है भाई? हाँ, लाइब्रेरीज, म्यूजियम, क्या लिखते हैं स्पेलिंग, म्यूजियम, एजुकेशन etc. The provision of the lighthouse has often been used as the standard example of the public goods since it is difficult to exclude ships from using its services. Free rider problem. Public goods provide a very important example of market failure in which market-like behavior of individual gain seeking does not produce efficient reduce if private organization don't reap all the benefits of the public goods which they have produced. Their incentives to produce it voluntarily might be insufficient. Consumers can take advantage of public goods without contributing sufficiently to their creation. If too many consumers decline to free rider, private cost exceeded private benefit and the incentives to provide a good or services through the market disappears. The market thus fails to provide a good or services for which they are needed. There is a need. Example, national defense, a standard example of the pure public goods. On the other hand, the free rider knows that he or she could not be excludable from the benefit of the national defense regardless of whether he or she contributed it to. Example, money paid by the government as with all volunteer army or
mercantries. Anytime non-excludability results in failure to pay the true marginal value, often called the demand revelation problem, it will also result in failure of generate proper income levels. Assurance contract. It is a contract in which participants make a binding pledge to contribute to building a public goods contingent on a quorum of a predetermined size being reached. Otherwise the good is not provided and any monetary contributions are refunded. A dominant assurance contract is a variation in which an entrepreneur creates the contract and refunds the initial pledge plus an additional sum of money if the quorum is not reached. The world of zero transaction cost has often been described as a quotient world. After producing goods and delivering service cost. Government provision. If voluntary provision of public goods will not work, then the obvious solution is making their provision involuntary. This saves each of us from our own tendency to be free rider, while also assuring us that no one else will be allowed to free rider. One frequently proposed solution to the problem is for government or states to impose taxation to fund of production of public goods. This does not actually solve the theoretical problem, because good government is itself a public good. Sometimes the government provides public goods using unfunded mandates. As an example is the requirement that every car be it with a catalytic converter. Subsidies and joint products. A government may subsidize production of a public good in the private sector. Unlike government provisions, subsidies may result in the some form of competitive market. Priority के basis पे subsidies देनी चाहिए. Example PDS. Sometimes it has seen a negative impact. Public plus private sector को मिलकर काम करना चाहिए. Mixed economy की बात करता है. Privileged group focused on individualism. Example, business model benefits from individual uses. Intrinsic motivation to produce. Benefit plus cost. The existence of privileged group may not be complete solution to the free rider problem. However, as underproduction of the public good may still resulted. Government को accountability maintain करके चलनी चाहिए. Financial incentives are not necessary to ensure the creation of the public goods. Merging free riders. Efficient production level of public goods. MRS, marginal rate of substitution, marginal rate of transformation. Merit good. Introduced the economics by Richard Musgrave, is a commodity which is judged that an individual or a society should have on the basis of some concept need rather than ability and willingness to pay. It can be defined as the good which would underconsumed and underproduced in the free economy. It can be seen as government run economy. Example USA. So पहले ये देखते हैं. दीवानी राइट, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, महलवारी, रैयतवारी, ज़मींदारी सिस्टम, रेलवे, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, मर्केंटलिस्ट, कैपिटलिस्ट फेजिंग. लेक्चर 9 वाला ही है. लेक्चर जो बताया था मैंने, डी इंडस्ट्रियलाइज, इजाजदारी सिस्टम पहले आया था. इजाजदारी बाय मुगल्स, कंट्रोल वी ब्रिटिशर्स, adopted by later इजाजदारी सिस्टम वॉज वॉरेन हेस्टिंग. ब्रिटिशर्स, गवर्नर ऑफ बंगाल, नेपोटिज्म को फॉलो करते थे ये लोग. दे then परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम 1973. फिर ज़मींदारी, उसको ज़मींदारी सिस्टम भी कहते हैं. फिक्स द स्लैट्स डिमांड फॉर लैंड रेवेन्यू परमानेंट्स विदाउट एनी प्रोविजन फॉर फिक्स्ड रेंट और ऑक्यूपाई राइट्स फॉर एक्चुअल कल्टिवेटर्स.
East India Company 1858 rule of EIC exploitation rule the Crown 1858 in 1957 rule by Crown policies England. India was very much dependent on handicraft industries. Bengal, Bihar, Odisha was full of resources. Diwani taxation implemented in these states. Famine 1769 to 70. फिर है मर्केंटलिस्ट फेज़ में देखो 1757 टू 1800 एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए. दिस फेज इन्वॉल्व डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस बाय colonial in which surplus Indian revenues were used to buy Indian finished goods and to be exported by England. In this stage, a significant drain of wealth from India occurred, amounting to 2 to 3% of Britain's national income, which helped to finance Britain's industrial revolution. After acquiring Diwani right over Bengal, Bihar and Odisha in 1765, the British East India Company focused on maximizing revenue through agricultural taxation, leading to various land revenue experiments. Mercantile capitalism phase. This stage is also termed as colonialism of free trade. It started with the Charter Act of 1813 and continued till 1860s. The trade monopoly of East India Company ended. Finance capitalism phase 1858 to 1947. The third phase 1858 onwards marked British India's directed control under the Crown and saw the rise of financial imperialism. British capital was organized through banks and import firm, consolidating existing exploitation trends. Revenue farming. It is also known as revenue farming Ijazdari system. The revenue collected system was used during the Mughal period, was later adopted by British in India. It was introduced in 1772 by Warren Hastings, the governor of Bengal. In the system, the revenue collection rights were auctioned annually to the higher bidder. फिर ये वाला हम देख लेते हैं. फाइनली मैंने ये बता दिया था कि जो 4 फेज में हम बांटते हैं. पहले फेज़ 1 में मुग़ल डायनेस्टी आई इंडिया में. लास्ट डायनेस्टी था. पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ट्रेड. जीडीपी हमारे पॉजिटिव था +4%. एक्सपोर्टर हम एक्सपोर्टर थे मुग़ल पीरियड में. ओपन इकोनॉमी तभी भी थी, तभी भी ट्रेड होता था, क्योंकि देखो मर्केंटलिज्म वाला 16-17 सेंचुरी से ही हम अपना, उससे पहले से ही हमारा ओपन ट्रेड सिस्टम था, मतलब 4 सेक्टर इकोनॉमी थी हमारी. फिर आया हमारा कॉलोनियल रूल फेज़ 2 में. कॉलोनियल रूल आया. 200 ईयर्स एक्सप्लॉयटेशन. जीडीपी नेगेटिव में थी हमारी. दीवानी राइट, टैक्स कलेक्शन सिस्टम. एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड. हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे, फिनिश्ड गुड को इंपोर्ट करते थे. एग्रीगेरियन इकोनॉमी हमारी थी, वो भी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने. क्या बोलते हैं, नील की खेती करवा के पूरा, मतलब पूरी तरीके से कैसे हमें नीचा कर सके वो किया. ड्रेन ऑफ वेल्थ थी, तुमने सुना होगा दादा भाई नौरोजी का बुक ड्रेन ऑफ वेल्थ, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उन्होंने लिखा था 1901 में. और फेज़ 3 है हमारा फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू 1991. जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट कैपिटल 15 अगस्त 1947. सोशलिस्ट कैपिटलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी हमें बताया. मिक्स्ड इकोनॉमी, प्लानिंग कमीशन आया. फिर प्लेन 1, 2, 3 प्लानिंग कमीशन. सिमिलरली इंडियन इकोनॉमी वाज एग्रीगेटिव ओरिएंटेड इकोनॉमी. एग्रीकल्चर सेक्टर वाज गिवन द फर्स्ट प्रेफरेंस. चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर, उसको रिप्लेस कर दिया नीति आयोग से. ये 2015 में, ये तो इसमें हुआ था. कब नीति आयोग में? 2015 में ना. ग्रोथ, इक्विटी एंड मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस का बनाना था हमें. 1951 टू 56 ग्रीन रिवॉल्यूशन. 51 टू 56 फर्स्ट में ग्रीन रिवॉल्यूशन. 56 टू 61 इंडस्ट्रियल सेक्टर पे. फिर आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन पीसी महालनोबिस. प्लानिंग कमीशन का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? पीसी महालनोबिस. आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन पीसी महालनोबिस. 1991 में बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट था. 10 डेज ऑयल इंपोर्ट फुलफिल कर सकते, हमारे पास इतने ही पैसे बचे थे 1991 में. ठीक है. हेल्प नेबरिंग कंट्रीज़, IMF, वर्ल्ड बैंक. फिर हमें LPG लाया. ठीक है. 1991 में जो हमारा जो क्राइसिस आया था हमारा, फिर हम LPG सिस्टम लाए.